न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञानस्य पावनतां हृदि निधाय जीवनस्य सुसंस्कृत मार्गे प्रवर्धमानाः प्रियदर्शकाः, वार्तावल्याः अभिनवम् अङ्कमादाय प्रणतिपूर्वकम् उपस्थिता अहं लता वसिष्ठः। श्रेयः प्रेयः समन्वित जीवन निर्माणाय सततं प्रयत्मानाः अयि वार्तावली दर्शकाः, ज्ञानेन सह शीलस्य महत्त्वं मनसि स्थापयन्ति सर्वाञ्च नमस्कुर्वती पुनरपि उपस्थितास्मि अहं निधिः। दर्शकाः, ज्ञानं न केवलं जीवनस्य आलोकः अपितु संस्कारस्य अपि मूलाधारः। सत्यं, ज्ञानस्य तावत् सहजम् अलङ्करणं शीलवत्वम् इति। अद्य वार्तावल्याः सुभाषित प्रभागे शीलमाहात्म्यमेव सर्वादौ अनुशीलयामः। शीलवान् पूजितो लोके, शीलवान् साधु सम्मतः, शीलवान् सर्वकर्मार्हः, शीलवान् प्रियदर्शनः। सदाचारी मनुष्य समाज में प्रतिष्ठा और सज्जनों का आदर प्राप्त करता है। उत्तम चरित्र से युक्त व्यक्ति अपने सत्यनिष्ठ, विनम्र और मर्यादित आचरण के कारण प्रत्येक उत्तरदायित्व के योग्य माना जाता है। उसका व्यक्तित्व सभी के लिए आकर्षक और अनुकरणीय होता है। वास्तव में सफलता, प्रभावी नेतृत्व और अटूट विश्वास का वास्तविक आधार उत्तम चरित्र ही है। A person of noble character earns respect in society and the esteem of the virtuous. Through integrity, humility, and disciplined conduct, such an individual is regarded as worthy of every responsibility. Their personality is admirable, inspiring, and worthy of emulation. In truth, noble character is the true foundation of lasting success, effective leadership, and enduring trust. सर्वथा सम्यक्। तावत् सर्वे अपि स्वस्वशीलसः कृताः स्युः, तदा जीवनं सुजीवनं स्यात्। आम्, तर्हि एतम् एव सन्देशम् अङ्गीकृत्य महत्वपूर्णं वार्ताशीलत्वं प्रदर्शयामः वयं प्रवाही वार्ता माध्यमेन। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आन्ध्रप्रदेशस्य भोगपुरम् इत्यत्र अत्याधुनिकस्य अल्लूरी सीतारामराजू इत्याख्यस्य अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनस्य उद्घाटनं विहितवान्। तत्र विभिन्नानां विकासपरियोजनानाम् आधारशिलामपि स्थापितवान् असौ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनरपि सामाजिके सञ्जालपटले दृश्याङ्कन सन्देशं सम्प्रकाशितवान्। सद्यः एव विरोध प्रदर्शनावधौ प्रधानमन्त्रिणं तन्मातरं च विरुध्य अपशब्दव्यवहर्तारः युवानः भ्रान्ताः इति प्रतिपाद्य भ्रान्तयुवजनानां सम्यक् दिशि आनयनम् अस्माकं कर्तव्यम् इति तेन विशदितम्। ऐषमः लोकपरीक्षा संशोधनाधिनियमः राष्ट्रपतिवर्यया स्वीकृतः। दोषिभ्यः कठोरदण्डः, प्रभूत धनदण्डः च लोकपरीक्षा संशोधनाधिनियमवर्ति प्रावधानेषु अन्वितौ। एतेन परीक्षायाः प्राक् प्रश्नपत्र प्रकटीकरणे सम्बद्धे अन्य भ्रष्टाचार कार्यजाते च विशेषतः अवरोधः स्यात्। संसदा राष्ट्रगौरवापमान निवारण संशोधन विधेयकम् अभ्युपगतम्। एतेन हि विधेयकेन राष्ट्रगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य अपमानः तद्गानसमये उत्पादितः विघ्नः वा सर्वथा दण्डनीयः भविष्यति। भारतेन पुनरपि संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि परिष्कारमालक्ष्य पक्षपोषणं विहितम्। परिष्काराय चितदेशानां संकीर्णाः विभाजनकारिणः च हितविषयाः सन्ति। अत्र बृहत्यः बाधाः इत्युक्तं भारतेन। पवित्रस्य श्रावणमासस्य जातः समारम्भः। जनैः भगवतः शङ्करस्य विधीयमानः अस्ति सश्रद्धं जलाभिषेकः। विशिष्य हरिद्वार देवघरादि क्षेत्रेषु गुञ्जायमानः अस्ति शङ्कर जयघोषः। प्रवाही वार्ताभिः भवद्भिः संस्कृत प्रवाहः अनुभूतः।
तावत् सर्वे एव संस्कृतप्रवाहम् अनुभवन्तु तदर्थं बहुविधायासाः भवन्ति इति सर्वे जानीयुः एव। वस्तुतः एतेषु एव आयासेषु अक्षरकन्दुकम् इत्यस्य महिमानं तु स्वयं प्रधानमन्त्री अपि ख्यापितवान्। तर्हि आयान्तु अद्य एतदाधृतमेव वृत्तविशेषं पश्यामः। संस्कृतभाषायाः अध्ययनम् अवबोधनं च कठिनम् इति प्रसिद्धः जनप्रवादः। किन्तु केरलं राज्यस्य एर्णाकुलजनपदस्य दक्षिणचित्तूरस्थस्य सेण्ट् मेरी यूपी इति नामधेयस्य विद्यालयस्य ज्ञानाधिगमविधिः भस्मनि हुतमिव ध्वंसयति तत् प्रवादमानसम्, यत्र बालविद्यार्थिनः पदकन्दुकक्रीडां विजानन्तः संस्कृतभाषामपि पठन्ति। चषकः कप् ट्रोफी। विद्यालयस्य संस्कृताध्यापकः अभिलाष प्रतापः पदकन्दुकक्रीडाव्याजेन बालविद्यार्थिभ्यः संस्कृतस्य प्रशिक्षणाय अक्षरकन्दुकम् इति प्रकल्पं निर्मितवान्। अक्षरकन्दुकम् इति प्रकल्पे पदकन्दुकक्रीडायाः प्रत्येकम् अभ्यासः संस्कृतवर्णैः शब्दैश्च सम्बद्धः अस्ति। पादनिक्षेपः, कन्दुकचालनं, लक्ष्यभेदनम्, ऐक्यम् इत्यादिभिः पदकन्दुकक्रीडायै प्रयुक्तपारिभाषिकशब्दैः छात्राणां मस्तिष्के नूतनानां संस्कृतशब्दानां व्यापारः स्वयमेव जायते। प्रत्येकं शब्दस्य अर्थः संस्कृतेन सह मलयालम् आङ्ग्लभाषयोरपि प्रदर्श्यते। छात्राः चित्रपत्रिकाभिः प्रदर्शनपत्रकैः च क्रीडन्तः एव भाषायाः शब्दाभ्यासं कुर्वन्ति, येन तेषां भाषाज्ञानं व्याकरणबोधश्च दृढौ भवतः। प्रकल्पेन अनेन छात्रेषु संस्कृतभाषायां रुचिः आत्मविश्वासश्च वर्धेते इत्येवम् अस्ति शिक्षकस्य अभिलाषस्य अभिमतम्। अक्षरकन्दुकमिति क्रीडाप्रकल्पः अस्ति एव किञ्चित् विशिष्टः। तत्परिणामे एव यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य मासिकस्य मन की बात इति कार्यक्रमस्य 37उत्तरैकशततमे संस्करणे एवंविध लघुप्रयासाः भवन्ति स्तुत्याः महत्वाधायिनश्च इति मनोगते प्रकाशितवान्। अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इससे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। एवं प्रकल्पे संस्कृताक्षराणि पदकन्दुके प्रयुज्यमान शब्दैः सरलमार्गेण बुध्यन्ते, येन हि अधिगमने आनन्दः अथ क्रीडाभिः जनसम्पर्कः अपि वर्धते, यस्य हि वैशिष्ट्यं स्वयं ख्याप्यते नवीननीतिशिक्षानीतौ तद्विद्वद्भिः। तेजप्रकाश लिखितं निधिविहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जब आप इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे तब पॉलिसी बाजार वहां पहुंचकर आपका पूरा साथ देगा, ताकि क्लेम के लिए आप परेशान होने के बजाय अपनों का ख्याल रख सकें। और क्लेम असिस्टेंस पॉलिसी बाजार का प्रॉमिस है। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है।
अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मनोरंजन सहकृतः संस्कृताक्षर ज्ञान परिपोषकः आयासः नूनं विशेषः। तर्हि अत्र वार्तावल्याः अग्रिमे त्रिज्याख्ये प्रभागे एतस्मै एव आयासाय श्लाघितेन शिक्षकविशेषेण अभिलाषेण सह साधितं विशेषसंवादं प्रदर्शयामः। नमस्ते अभिलाष प्रताप, वार्तावल्यां भवतः हार्दिकं स्वागतमस्तु। धन्यवादः। नमस्ते। सर्वादौ तु भवते भूरिशः शुभकामनाः, यतोहि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भवतः नवाचारम् अक्षरकन्दुकम् इति नामाख्यं प्रशंसितवान्। कथम् अनुभवति, कथं प्रतिक्रियाः प्राप्नोति, अथ किम् उत्तरदायित्वं भवतः वर्धितम्? आम्, प्रधानमन्त्रिणा अक्षरकन्दुकम् इति नवाचारस्य प्रशंसा मम जीवनस्य अनुस्मरणीय कक्षः आसीत्। एषा प्रशंसा न केवलं मम न अपि तु विद्यालयस्य विद्यार्थिनां, सहकर्मिणाम्, अभिकामिनां च सम्मानः अस्ति। अस्याः प्रशंसायाः अनन्तरं मम उत्तरवादित्वं बहुधा वर्धितम्। अधुना संस्कृतभाषायाः प्रचाराय अधिकं नूतनं सृजनात्मकं च कार्यं कर्तुं प्रेरणा प्राप्ता। अस्तु, बहु शोभनं। तर्हि अक्षरकन्दुकं यदा नाम वयं शृणुमः तदा मनसि उत्साहः अथ तत्र कौतूहलं तत्र उत्पन्नं भवति यत् किं नाम अक्षरकन्दुकम् इति। कथं भवता एतद् विषये चिन्तितम्? अक्षरकन्दुकं केवलं क्रीडा न अपि तु शिक्षायाः नूतनमार्गः अस्ति। बालाः आनन्देन क्रीडन्तः, संस्कृतवर्णानां शब्दानां वाक्यानां च सहज अधिगच्छन्ति। अस्य मुख्यलक्ष्यं संस्कृताध्ययनं शोचनं सरलम् अनुभवात्मकं च कर्तुम् अस्ति। अस्तु, तर्हि कथं चिन्तितवान् भवान् एतस्मिन् विषये? छात्राः क्रीडाया सह अध्यापनं बालानाम् अत्युत्साहेन पाठनं कुर्वन्ति। अतः इति स्तरीय क्रीडानां मम सहजायाः अध्यापनेन प्राप्तुम् आकृष्टं भवति। अस्तु अस्तु, तर्हि बालाः मोबैल् इति तत्र एतेन माध्यमेन क्रीडासु रमन्ते। एतस्य प्रयोगपुरस्सरं यदि भवान् चिन्तितवान् यत् संस्कृतक्रीडामाध्यमेन संस्कृताध्यापनस्य संयोजनं कर्तव्यम्, एतस्य कथं लाभं पश्यति भवान्? क्रीडायाः बालानां मम मनसः सहजया अध्यापनस्य प्रति आकृष्टं भवति। तेन केवलं भाषां पठन्ति अपि तु आनन्देन अनुभवन्ति। क्रीडामाध्यमेन स्मरणीयशक्तिः, सहभागिता, आत्मविश्वासः, भाषायाः प्रयोगः च वर्तते। अस्तु, तर्हि छात्राः कथं प्रतिक्रियाः तत्र कक्षायां प्रददति यदा भवान् अक्षरकन्दुकमाध्यमेन तान् पाठयति? विद्यार्थिनः अत्यन्तम् उत्साहेन अस्मिन् उपक्रमे सहभागी भवन्ति।
ते क्रीडन्तः अपि संस्कृतं शिक्षन्ते पूर्वं ये संस्कृतभाषायां संकोचम् अनुभवन्ति स्म ते अधुना आत्मविश्वासेन संस्कृतं वदन्ति अक्षरकन्दुकमाध्यमेन भवान् कथं तान् छात्रान् पाठयति इत्येतस्य किमपि उदाहरणं? संस्कृताध्यापनं बालानां रुच्या अनुसारं क्रीडारूपेण प्रस्यूयते तर्हि अवश्यम् आकर्षिताः भविष्यन्ति अस्माभिः परम्परागतानुज्ञानम् आधुनिकक्रीडाविधेन संयोजितं तदा संस्कृतं तेषां प्रियभाषा भवन्ति। अस्तु, तर्हि राष्ट्रीयशिक्षानीतेः परिप्रेक्ष्ये यदि वयं चिन्तयामः यत् अक्षरकन्दुकमिव अक्षरकन्दुकसमानाः तत्र यदि नवाचाराः प्रयोक्तव्याः भवेयुः तर्हि कथं भवान् चिन्तयति यत् उपयोगी भविष्यति संस्कृताध्यापनार्थं? राष्ट्रीयशिक्षानीति अनुभवात्मिकशिक्षा कौशलविकासं मातृभाषायां भारतीयज्ञानपरम्परां च प्रोत्साहयति। अक्षरकन्दुकम् एतेषां सर्वेषाम् उद्देश्यानां साकाररूपम् अस्ति। एषः नवाचारः शिक्षाम् आनन्दमयीं सृजनात्मकं विद्यार्थीकेन्द्रितं च करोति। अभिलाष, भवान् छात्रान् तु संस्कृतं पाठयति, भवान् कथं संस्कृतं प्रति रुचिमान् सञ्जातः? प्रिडिग्री तत् संस्कृतपाठनं करोमि, ततः पुनः बिरुदानन्तरबिरुदम् अध्यापक परिशीलनं करोमि। अस्तु, पाठनसमये यादृशाः श्लोकाः भवता तत्र प्रयुज्यन्ते तेषु श्लोकेषु एकं श्लोकम् अत्र श्रावयति अस्मान् दर्शकान्, छात्राः अपि प्रसन्नाः भविष्यन्ति। ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्तु, साम्प्रतं यदा प्रधानमन्त्रिणा भवतः नवाचारः प्रशंसितः, साम्प्रतं भविष्ये भवान् किं चिन्तयति, कथं योजनाः सन्ति? संस्कृतभाषा साधारणजनमध्ये कठिनभाषा इति मन्ये। अहं भाषायाः प्रचारणार्थं बहूनां प्रचारणरीतिम् अवलम्ब्यते। अद्य इतस्तरः 2026 में फुटबॉल वर्ल्ड कप चलते रहेंगे। इस टाइम में football and Sanskrit mix. I'm trying to connect with the football and the Sanskrit language. It's very interesting for children and learn to more Sanskrit words through the English Sanskrit alphabet. It's very interesting class, very interesting, and the football energy to convert to my class. That's the भवतः संकल्पः। अस्तु, तर्हि प्रतियोगितानां कन्दुकप्रतियोगितानां माध्यमेन भवान् छात्रेभ्यः तत्र पाठयितुं शक्नोति यत् तेषां शब्दानां कथं प्रयोगः करणीयः, एतदेव। अस्तु, बहु शोभनम् अभिलाष। इति नायकः संस्कृतपदं नायकः तु मलयाळं ट्रान्स्लेशन् and Malayalam meaning and English meaning. It's printed in a short playing card, like Uno card. Chatraha to Malayalam translation and Malayalam meaning and English meaning. सब एक कार्ड में Uno कार्ड में प्रिंट करेगा and डिजाइनिंग करेगा। इस तरफ इस like this teaching very interesting for children. They learn Sanskrit words through this playing method. They were interested to this method is very play and study method is very effective to teaching Sanskrit. That's my aim. अस्तु, भवतः संकल्पः छात्रान् इतोपि रुचिमान् करिष्यति तत्र संस्कृतं पठितुं। न केवलं छात्राः एव पठिष्यन्ति, परं संस्कृतं तत्र सर्वेभ्यः अपि सुलभं भविष्यति भवतः एतेन नवाचारेण इति मन्ये। बहुशः धन्यवादाः भवती अभिलाष।
वार्तावल्यां भवता समयः प्रदत्तः। Thank you and thank you for inviting my this interview. Thank you all of your crew and the conducting manager. Okay, thank you everyone. धन्यवादः वार्तावल्यै समयप्रदानाय। भवते अपि धन्यवादः। नमस्ते। केड़ा मसाला होए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। एक बात समझ लीजिए, न बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको ये सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। साधु सर्वथा सर्वत्र च संस्कृत प्रसारः विशेषतः भवेद्नामिति अस्माकमपि आयासः। आम्, अस्मदीयायासेषु तावत् सङ्गीतस्य अपि भवति महत्वपूर्णं स्थानम् इति वार्तावली दर्शकाः जानन्ति एव। तर्हि अद्य पुनरपि अविलम्बम् एतमेव आयासं प्रदर्शयामः सर्वेषां संस्कृतसङ्गीतप्रियाणां पुरस्सरम्। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजां भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथम्। गले रुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालं जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथम्। बहु सम्यक्। दर्शकाः, संस्कृतसङ्गीतस्य मधुरधारया अनुप्राणिताः वयं भवतां प्रतिस्पन्दनप्रकृतिकैः सन्देशैः अपि
प्रेरिताः भवामः। अतः सततं भवतां दर्शकानाम् अस्मासु किं वा वार्तावल्यां स्नेहवृष्टिः स्यादिति पुनः पुनरपि अध्यर्थना। अस्तु, अधुना तु अद्यतनः अङ्कः समाप्तिवेलां प्रति आगतः। आम्, तर्हि अग्रिमसप्ताहे वार्तावल्याः अभिनवाङ्कमादाय पुनरपि आगमिष्यामः। एतन्मध्ये संस्कृतम् इतोपि संवर्धयामः इति शुभाशयेन सह सर्वान् नमस्कुर्मः। स्तवं यः प्रभाते नरः शूलपाणि पठेत् सर्वदा भर्गभावानुरक्तः सपुत्रं धनं धान्यमेत्रं कलत्रं विचित्रं समासाद्य मोक्षं प्रयाति प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथम्।